We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. In last video we discussed about internal sex organ. Now we will discuss about external sex organ of the female reproductive system. You can see here the labia majora, labia minora, mons pubis, clitoris, urethra, vaginal opening. Right. So these are the external sex organs of the female reproductive system. Vulva that is run from the pubic area downward to the rectum, so it is known as vulva. Then what is labia minora? So it is known as laser lip or small lips, right? Thin hairless ribs at the entrance of the vagina and with joint behind and in front, and in front split to enclose the clitoris, right? So it lies just inside the labia majora, right? So just inside the labia majora, and it is surround the opening to the vagina. What is vagina? Vagina is the canal that join the lower part of the uterus to the outside of the body, and the urethra. So urethra is tube that carries urine from the bladder to the outside of the body, right? Then what is labia majora, also known as greater or large lips, is enclose and protect other external reproductive organs, and is a relatively large and fleshy and are comparable to the scrotum in the male, right? So they also part around the vagina that contain 2 glands, that is Bartholin gland, which help lubrication during the intercourse, and they also contain sweat and oil secreting gland, right? And after the puberty, the labia majora that is covered by the hair or covered with the hair. Now what is clitoris? A small p-shaped structure, an important part in sexual excitement in female, play important role, right? And the 2 labia minora, जो 2 labia minora है that are meet at clitoris, small sensitive protrusion, right? Then it is covered by the fold of skin that is called prepuce, right? And like the penis, that is very sensitive and it is stimulation and can become erect. Then the urethral or orifice of the urethral orifice or external urinary opening, right? So below the clitoris, the upper wall of the vagina, and it is passage for urine, and it is an opening of vagina that is separated from the urinary opening and located below it. Then what is hymen? It is a pinkish membrane and often shaped like crescent. So thin crescent fold of tissue, and it is partially covers the opening of the vagina. It is found at the lower end of the vagina, right? And it allow करेगा, menstrual जो blood है उसको बाहर आने के लिए वो allow करेगा. Then hormones, right? So in female sex hormone there is 2, estrogen and progesterone. So estrogen, it is 3 internal ovarian secretion, estrol and estradiol. Main functional point of view, from the functional point of view, they are closely interrelated, right? So they are secreted by interstitial cells of stroma and Graafian follicles.
and maximum secretion that is begun at the time of ovulation. They also secreted during the pregnancy by the placenta, and ओवरियन और प्लेजेंटा के अलावा दे आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स. इसके फंक्शंस क्या है? प्यूबर्टी चेंज और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल्स में चेंजेस, राइट. देन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ वजाइना, यूटेरस, फॉलिकल ट्यूब एंड द ओवरी. देन एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में, देन यूटेरस के ग्रोथ में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. साइनेर्जिस्टिक इफेक्ट और एक्शन शो करता है विद द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द menstruation and pregnancy. प्रोलैक्टिन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और स्केलेटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा. देन इट्स एक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ पिट्यूटरी एंड थाइमस ग्लैंड, राइट, और ऑल्सो इंस्पायर लिबिडो. देन प्रोजेस्टेरोन, सो इट इज derived from corpus luteum and is from every month in ovary after the ovulation from its healing scar. और मेनली ये सीक्रेट होता है एवरी से, वो मेनली सीक्रेट होता है, लेकिन प्लेजेंटा और एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी वो सीक्रेट होता है इन अ स्मॉल अमाउंट. इसके फंक्शंस है प्रीमेंस्ट्रुअल स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अकर्स कब होगा? व्हेन प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल, राइट. और प्रेगनेंसी दैट इज सस्टेन्ड बाय प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन एंड इट इज न्यूट्रलाइज oxytocin of pituitary and protect pregnancy by preventing uterine contraction. Then also involving breast develop under the progesterone in stimulation. Then menstruation that is inhibited during the pregnancy. Then birth passage relaxed by progesterone and widens to facilitate birth. Then protein metabolism is also slow down by it, and the estrogen, progesterone and the combination relationship, it show synergistic same effect or opposing or competitive type effect that is depend on the stage in the sex life of the woman. Now ovarian hormones, right, so estrogen, progesterone involved in or play important role in menstrual cycle change, development of sex organs, then puberty change, pregnancy, then development of breast, right. If there is birth of the baby, that is controlled by oxytocin of post-menstrual pituitary gland and election hormone of the ovaries. Now physiology of menstruation. So what is menstruation word means? It is derived from Greek word means मतलब months. So ये जो मंथली होने वाला प्रोसेस है, मंथली vaginal bleeding होगा, coming at interval of about 28 days from estrogen, progesterone, primed and uterine endometrium. So occurs during the reproductive period, that is menarche, that is फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है वो, एंड मेनोपॉज दैट इज बिफोर द फाइनल सिचुएशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, राइट. और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट ऑन द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस. सो इट इज सिमिलरली साइक्लिक मंथली ब्लीडिंग है, सिमिलरली साइक्लिक monthly vaginal bleeding that occur from only estrogenated endometrium, that is known as ovular menstruation. Now menstruation क्या है? साइक्लिक फेज है ब्लड फ्लो का, राइट. साइक्लिक फेज ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड with shades of endometrium from the uterus of a woman at monthly interval. So cyclic phase, blood का flow होगा with the shade of endometrium from the uterus, woman में होगा at the monthly interval. और जो menstrual flow है उसमें blood, mucus, endometrial strip, WBC और unfertilized ovum होगा, और it is flowed soon after the discharge. सो जो फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, इट इज़ नोन एज फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल. सो मेनली इसमें 4 फेजेस है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड ओव्यूलेशन एंड सेकेंडरी फेज. सो पहला जो फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग फेज. सो इस फेज के टाइम पे क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम सेल्स है
ब्लड एंड म्यूकस वो पास आउट हो गए थ्रू द वजाइना, और ये मेनली 4 दिन के लिए है, बट रेंज फ्रॉम 3 to 5 days, और इससे ज़्यादा है बियॉन्ड होगा तो दैट इज़ कंसिडर एज अ एबनॉर्मल। वेरियस हॉर्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, follicle stimulating hormone that is FSH, and luteinizing hormone that is LH. They are found in minimum quantity, कम क्वांटिटी में हो गए, कम हो गए ये हार्मोन। सो मतलब कि डिक्लाइन ऑफ दिस हार्मोन लेवल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन नेक्स्ट इज प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब नेम जो है इसका प्रोलिफरेटिव, नेम ही सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, राइट। सो ये फेज में एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा, राइट। जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ेंगे और एक टाइम पे जाके हाई हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द फेज। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एस्ट्रियस फेज, बिकॉज जो एस्ट्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोलिफरेशन के लिए। देन जो FSH और LH है, ये हार्मोन के लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स स्टार्ट, राइट। सो इसमें फेज में क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन की वजह से डेवलपमेंट होगा और मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल स्टार्ट होगा। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज एंड इट इज लास्ट फॉर 10 to 14 days. So that is from 5th to 15 or 20 days. Then next is ovulation. So before the 14 days of the start of menstruation, मतलब 14 days से पहले, before the 14 days of start of the menstruation start होने के पहले 14 days पहले, right. So सडन राइज होगा FSH और LH के लेवल में। जो ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स है ओवरी of the one ovary that rupture to liberate an ovum, जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है ओवरी में वो रप्चर होगा और लिबरेट करेगा ओवम को, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और इस फेज में एट द डे ऑफ द ओव्यूलेशन जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज राइज बाय 1 degree Fahrenheit, राइट। सो जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर वो भी इंक्रीज होगा। देन फोर्थ इज सिक्रेटरी फेज। सो आफ्टर द ओव्यूलेशन फेज और आफ्टर द ओव्यूलेशन जो एंडोमेट्रियम है वो ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेस्ट्रियस फेज और ऑल्सो नोन एज सिक्रेटिव फेज। दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल दैट मेंटेन हाई, एंड जो कॉर्पस लुटियम है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स। जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है वो रप्चर होगी, उसके बाद कॉर्पस लुटियम का फॉर्म होगा, राइट। सो इट इज़ लास्ट अबाउट 14 days। और जो कॉर्पस लुटियम है दैट इज़ डिजनरेट इफ द ओवम दैट इज डज नॉट गेट फर्टिलाइज। अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम है वो डिजनरेट होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दे आर वाइटलिटी ऑफ कॉर्पस लुटियम दैट इज मेंटेन। सो ये जो फिगर है आप यहाँ पे देख पाओगे जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, द फेजेस ऑफ ओवरियन साइकिल। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉलिक्यूलर फेज, लुटियल फेज, यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के लेवल दैट इज FSH एंड LH। यहाँ पे ओवरियन साइकिल, प्राइमरी फॉलिक्यूल, थेका, एंट्रम, ओव्यूलेशन होगा यहाँ पे एट द डेज ऑफ 14। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो डे ऑफ द 14 days लिखे हुए 0 to 28, राइट। देन कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन होगा, मैच्योर कॉर्पस लुटियम का होगा एंड कॉर्पस एल्बिकांस। So this is ovarian cycle, right, and ovarian follicles. Then ovarian hormone level, that is estrogen and progesterone and inhibin hormones. Then यहाँ पे uterine cycle देखने के लिए मिलेगा आपको, right. And then phases of uterine cycle, menses, proliferative phases and secretory phases. Now जो hormones है, right, so hormones during the menstruation, जो estrogen जो है वो secrete होगा by the ovaries that influence the proliferative phase of the cycle. Then simultaneously they develop and maturation of Graafian follicles that occur, right. Then rupture of the follicles, setting free ovum, rupture होगा follicles का, वो ovum को free करेगा, that is followed by formation of corpus luteum। उसके बाद जो follicles है जो follicles है उसका rupture होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ओवम फ्री होगा, और उसकी वजह से उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होगा। सो सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस लुटियम एंड इज अलोंग विद एस्ट्रोजन एवर्स। सो सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम
अगर फर्टिलाइजेशन में फेल हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम फेलर cause regression of corpus luteum by the 22 days of menstrual cycle and fall of progesterone level. So this withdrawal of progesterone leads to menstrual bleeding in 6 to 7 days. So there is known as withdrawal bleeding. Now we will discuss about hormonal regulation of the female reproductive system. So what is female reproductive system का जो hormonal regulation, सो कैसे होता है हार्मोनल रेगुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, राइट. सो ये डायग्राम में आप देखोगे जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, राइट, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है GnRH. सो दैट इज FSH एंड LH. FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन. सो दे आर सिक्रेटेड, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, दे आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. Controls ovarian and uterine cycle, and they stimulate release of FSH and LH, right, from the anterior pituitary gland. So जो FSH है that initiate follicular growth, वो follicular growth को initiate करेगा, right, and stimulate करेगा ovarian follicles को to secrete estrogen. Then जो LH है, LH that stimulate further development of ovarian follicles, right, and they stimulate thecal cells of the developing follicle to produce androgen to be converted into estrogen. तो stimulate करेगा thecal cell को of the developing follicles में जो thecal cell है उसको stimulate करेगा, क्यों, to produce androgen produce करवाने के लिए, और androgen का convert होगा कहाँ पे, estrogen में, right. And it also trigger the ovulation, right, and it promote formation of the corpus luteum. So corpus luteum क्या प्रोड्यूस करेंगे, corpus luteum प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन हार्मोन्स. सो ये जो एस्ट्रोजन है that is isolated from plasma of female, that is beta estradiol, estrone and estriol, right, and it promote development of and maintenance of female reproductive structure. So development और maintenance को promote करेगा, किसको, फीमेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, फेमिनाइन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रेस्ट को, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा एंड मॉडरेट लेवल इनहिबिट करेगा रिलीजिंग ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH एंड LH को. देन जो प्रोजेस्टेरोन है दैट इज मेनली सीक्रेट फ्रॉम द सेल ऑफ द कॉर्पस लुटियम एंड इट इज़ वर्क विथ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के साथ वर्क करेगा टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर मेमरी ग्लैंड टू सीक्रेट मिल्क एंड इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड LH. देन जो रिलैक्सिन है दैट इज प्रोड्यूस बाय कॉर्पस लुटियम, रिलैक्सिस करेगा यूटेरस को बाय द इनहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम. देन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी that increase flexibility of the pubic symphysis and dilate uterine cervix, right, or also inhibit contraction of the uterine smooth muscles, right. Then inhibin जो है that is secreted by granulosa cells of growing follicles by the corpus luteum after the ovulation. मतलब दो टाइप से वो secrete होगा, from the granulosa cells of the growing follicles and by the corpus luteum after the ovulation, and they inhibit the secretion of FSH and LH. So this is all about the hormonal regulation of the female reproductive system. So in today's lecture we discussed about the female reproductive system, introduction of a reproductive system and revision of the last lecture, and female reproductive system, its internal and external organs, and menstrual cycle, ovulation, oogenesis and hormonal regulation of the female reproductive system. If any query, you can comment or you can ask personally. Thank you.